ग्रीड फॉल जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो एक्चुअली मेरे को teerfredee की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, बस उधर ई डाल दिया मैंने। फ्राडी है ना स्पेलिंग, फ्राडी, मैंने फ्रीडी लिख दिया एक्चुअली। फाइंड द, तो मैं अभी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या कौन सी क्वेस्ट करूँ। या तो ये फ्री द कैपिटिव नॉट्स, लेट्स जस्ट डू दिस, सैंड मटीरियल्स। सो मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, इस वजह से मैं कुछ ज्यादा लेवल का हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन सा राइट टाइम होने वाला है। तो मैं इसको अभी कंपोज कर रहा हूँ। मैंने अल्फा रखी हुई थी क्योंकि इसकी गन वाली जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ना। एंड्योरेंस इसकी 2 है, बट रिलेशनशिप लेवल हमारा अभी भी सस्पिशियस है। उसको करने के लिए इस वजह से मैं वो रख रहा हूँ। रिलेशनशिप अभी भी हम दोनों का वो है, बट ओ भाई साहब, तो एक्चुअली मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मैं इससे बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही दोनों की क्वेस्ट कर सकता हूँ, समझ आया। अब मैं सिर्फ इन्हीं दोनों की क्वेस्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, अभी मैं और किसी की क्वेस्ट नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे को वासु और इनकी क्वेस्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी होगा कुछ। तो इसके बाद हम लोग वासु है या वासो है। तो मैं लेवल 16 हो चुका हूँ, लुड़ाकर बहुत सारे कांड किए। तो अबे यार वही तो बात है ना, समझ नहीं आ रहा। ये है फ्री द कैपिटिव नोट्स, ये है फ्री द कैप, दोनों हैं। और कौन, ओके ओके ओके। तो मैंने एक्चुअली मैं 3-4 गार्ड को उड़ा दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भाई तूने गलत काम किया, ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। तो एक्चुअली वो लोग गलत काम कर रहे थे और गलत काम को करना हमारा फर्ज है कि हम लोग एज अ मर्चेंट है। तो क्या हुआ, हम लोग बहुत लड़ते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं, हम हरना भी, वो भी जानते हैं, हर चीज जानते हैं हम लोग। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई गार्ड नहीं होगा हमारे लिए। वेट व्हाट, नहीं इधर ही है, हटो यार। A feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free. Come and see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed, of that I can assure you. चुप रहो यार। इधर एक है भाई, कितनी बड़ी जगह है ये। मुझे नहीं पता है, बहुत बड़ी जगह है भाई। इधर भी तो एक होता है। Halt! You have no authority to go any further. Do not forget that there is only one song that can make us change our minds, Greenblood. Played with golden notes. You said it. Or songs of steel. They also open doors. Very well. Let's just say I'm going to have to break my way in. Why must this sort of thing happen when I'm the one on guard duty? Why this type of thing happen? और ये ग्रीन ब्लड क्यों कहता? ओ की मिल गई, की मिल गई, की मिल गई। लॉक पिकिंग। Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness.
They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well. Not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. We should go see this Domitius after all. What he will tell us may help us understand. भाई एक सीट दी हुई थी, सिर्फ एक सीट. How nobody enters? What? भाई यार क्यों उठा लेता है इतना ज़्यादा वेट ये? I'm gonna die यार. ये कितना ज़्यादा वेट, पता नहीं कहाँ से हो जाता है मेरे पास इतना ज़्यादा वेट. देख रहे हो कहाँ रखूँ मैं? मेरा कोई जगह नहीं है. कोई भगवान भी नहीं दे सकता मेरे को जगह. There is one what? Question Petrus. अबे सारी क्वेश्चन पेट्रस हैं. बस डन. अच्छा पेट्रस है ना. पेट्रस भैया कहाँ मिलेंगे? ये रहा. तो मैंने इधर के बैंडेट्स को हरा दिया तो मेरे को एक स्वॉर्ड मिली जो कि इतनी ज़्यादा घटिया है, मैं क्या बताऊं. ये वाली स्वॉर्ड कहाँ गई? ये देखो लाइट ऑफ, ये वाली 73 है. लाइक इससे अच्छी तो मेरी ये वही एपिक वाली है. और एक स्वॉर्ड मैंने इस बंदे को दे दी. ये देख रहे हो इस बंदे को. तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसके पास एजिलिटी 3 नहीं है और इसकी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा गंदी है. मैं इसको 73 वाली दे सकता हूँ. नॉट इनफ एजिलिटी 53. इसके पास सिर्फ एजिलिटी 1 है. ओके दैट्स काइंड ऑफ स्टूपिड. इन दोनों के लिए मेरे को 3 चाहिए और इसका आर्मर भी बहुत ज़्यादा गंदा है. लेट्स जस्ट गिव हर अ गुड आर्मर. एंड्योरेंस भी नहीं है बहन जी के पास. वाओ यार आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर. इसके मेरे पास यार व्हाट शुड आई डू विद हर? अच्छा ये बस एंड्योरेंस आ ही नहीं सकती, ये बस सिर्फ एजिलिटी. ओके आई एम गोइंग टू बी अ स्टूपिड गाय इफ. तो मेरे पास जितने भी हो सारे एंड्योरेंस वाले ही हैं. इसके लिए कुछ अलग से निकालना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए. अच्छा इसको लॉक पिकिंग मिल जाएगी ना. ओह मैन am I here to just die or somewhat? क्योंकि मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा. something else. ये ना नहीं ये मैन मैं घर भूल गया अपना. कहाँ है? डिसार्डे रेसिडेंस. भाई अभी 2 सेकंड पहले ही हुआ था एक्चुअली में. आप तो और भी नहीं भाग सकता. I don't have. Oh man, भाई मेरे से ज्यादा अच्छा आदमी कौन है? मेरे से ज्यादा भला आदमी कौन है? सच भाई मेरे से ज्यादा भला आदमी कौन है इस दुनिया में?
भाई अब जाके तो मेरे पास एक आया होगा। हाँ एक भी नहीं है। अब यार डायरेक्ट रास्ता था। अब तो और भी नहीं उठा सकता। लाइक बिल्कुल इधर से कितनी पास था। There's nothing I can do. मेरे घर पे बैरिकेटिंग लगा रखी बेटा, कोई ना घुसे। तो सबसे पहले भाई जो नहीं चाहिए ना, सबसे पहले इन बहन जी को जरा देते हैं हम। है ना, ये वो वाली पकड़ सकती है सिर्फ एजिलिटी 1 वाली, या एजिलिटी 2 वाली, एजिलिटी 3 वही नहीं पकड़ सकती। तो इसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जैसे कि अभी मैंने सबसे अच्छी दे रखी है इसको। फिर ये तो एक भी नहीं है इसके लिए। है, ये ले सकती है। नहीं ये तो मेरा है, ये ले सकती है। ये किसी के वहां का भी तो है, जल्दी मर सकती है क्योंकि ये 64 वाले। अच्छा एंड्योरेंस नहीं है इस बहन जी के पास। चलो ठीक है, एक ज़्यादा है, सारी एक साथ रख दूंगा फिर मैं, क्योंकि मेरे को पता है बूट्स मेरे पास इससे अच्छे हैं। इन बहन जी के लिए सब कुछ हो गया। अब जितना भी ये सारा धर दो बेटा। सिर्फ ये लेजेंडरी वाली, इसके लिए एजिलिटी 3 चाहिए जब होगा। एक बूम ब्लेड स्ट्रिंग ये वाली मैं रख रहा हूँ। अब ये मत सोचना ये कहाँ से आई, मैंने खरीदा बिल्कुल नहीं है, इसको पता कहाँ से आई। ये मैंने एक्चुअली मैं उधर ही जा रहा था, एक चेस्ट से मेरे को मिली, पता नहीं कहीं कोई चेस्ट से मिली। तो अभी मेरे पास एक ये 31 वाली है, ये वो वाली नहीं है, दूसरी वाली नहीं है। ये वो दूसरी वाली जो थी वो 20 के आसपास थी, ये उससे 10-12 ज़्यादा है। और ये है मेंटल पावर 2 वाली, जिसको मेरे को कम से कम 19 लेवल पे मिलेगी। अब जितनी भी हैं ये सारी रख दो। फिर मेरे पास ये एपिक वाला आर्मर है, ये जितने भी ये सारे रख दो भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल करने होंगे मैं सेल कर दूंगा, वो तो ऑफलाइन का काम है। 64 ओके।
अभी सारी रख दो भाई, किसी को क्या जरूरत है। और अब चेस्ट पे जाएंगे। जो 73 वाला है वो नहीं चाहिए, जो कि मेरे से जो ज़्यादा है ना। फिर 25 मेरे से ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। जैसे कि 67 वाला रख सकते हैं हम। वेट, अबे मेरा वाला लॉक पिकिंग वाला गया भाई। हाँ ये रहा ना लॉक पिकिंग वाला। इन्वेंटरी में जाने दो। 65 वाला, फिर 64 वाला। बूट्स नहीं, नहीं, सिर्फ कुछ ही आर्मर रखने हैं। अब एक मिनट, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो उठाया नहीं मैंने। कल मिक्स पॉइजन सारे जाए। हेज पोर्शन तो नहीं चाहिए। स्विफ्टनेस, आर्मर, ऑइंटमेंट, रीजनरेशन, ये सब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बैलेंस, फ्यूरी पोर्शन, आमो 100 है। तो मैं अभी अच्छा एल्केमिस्ट चाहिए ना। प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंटल डैमेज, पॉइजन, स्टेटस, बस। पाइन रेसिन और ये सारे बहुत सारे हैं। ड्रैगन बर्ड रेजिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ मिलती। क्रूड आयरन ऑयल, ऑब्सीडियन बहुत सारा है। रूबी भी बहुत अच्छी है। होप फंगस ये, और बस कितनी सारी चीज़ें हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ लेट्स डू दिस जॉब। फाइंड क्विंटॉक्ट, ऑफर योर हेल्प टू वाफो। सिर्फ वासो ही है, ठीक है ना। ये पेट्रोस कौन है? लेट्स सी। अच्छा पहले उसको रखना पड़ेगा अपनी टीम में। कंपोज, अच्छा पेट्रोस ये है। अब मुझे एक बार देखने दो इस बंदे के पास है क्या सामान। एक्चुअली इस घर से बाहर निकलते तब देखते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो पेट्रोस के पास भी नहीं, पेट्रोस बोल रहा हूँ, इसके पास ठीक ठाक सामान ही है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। हाँ मिल गया, हो गया हो गया। कहीं पे भी चले जाओ क्या? डिसाइडेड रेजिडेंसी चलते हैं। सो भाई एक्चुअल में कल एक्चुअल में आपको याद होगा वो जो एक आर्यन है वो एक्चुअल में मेरा स्कूल का फ्रेंड है, ठीक है ना। सो पता ही चल गया होगा, ठीक है ना। बहुत सारी स्ट्रीम में बोला है अगर पूरा स्कूल होता एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। तो मेरे क्लास में है, मेरा क्लासमेट है। तो एक्चुअली में हम इस साल मिले नहीं ऑब्वियसली कोविड की वजह से। तो एक्चुअली मैंने उससे बोला भाई तेरे ग्लिच ने 134 वो करा दी भाई। उसने बोला कि भाई वो तो यूट्यूब का ग्लिच था, बट किया किसने? उसने। लाइक लिटरली मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरी स्ट्रीम में कल क्या हो रहा था। मैं लिटरली उस स्ट्रीम के बाद इतना ज़्यादा हंसा हूँ ना, मैं हंसी रोक नहीं पाया भाई साहब कहाँ से। और फिर मैंने स्ट्रीम चेक भी की, लाइक नहीं की उसके बाद मैंने, बट एक बार थोड़ी सी चेक की थी क्या हुआ है। मैंने सही में चेक की थी। हाँ हेल्प टू वासो कैसे? एक बार मैं दूर जाता हूँ इधर से। वो चल रहा है मेरे साथ, ठीक है ये है ना। Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family name. But
I cannot go to the harbor office in person to see my file. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy. Did you want anything else? How did you become a Nord? As you may have guessed, I am sea-given. I was given to the Nords when I was a little child, for a reason I ignore. I think I was originally from the congregation, but I have no memory of my family. I took my first steps on the deck of a ship. That's all I can remember. Did you want anything else? I must leave you. कैसे करूं मैं? Offer your help to Aso. Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy. Did you want anything else? I must leave you. क्या है भाई? पता नहीं कितने नोट मिलते रहते हैं यार सही में. What? I have one remaining? How? How is this possible? अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को वो मिल जाएगा ना, बट अभी है नहीं तो मैं अभी यूज नहीं कर रहा. रीसेट स्किल्स तो कोई फायदा नहीं है. वॉरियर मैंने मैजिक ले रखा है. आई डोंट नीड इट भाई. Desarde, I've always hoped to one day, but how did you want? I must leave you. क्या से बट क्वेश्चन पेट्रोस कैसे करना है पर ये isn't it वो बंदा कुछ अपना find the मैं कहाँ से लाऊं? Offer your help when you are less busy. एक मिनट जरा. Let's see भाई. Like मैं कैसे करूं? Main quest, side quest. मैंने कोई इसमें तो कुछ नहीं करके रखा. ये यहीं पे है मेरे पास. भाई तुझे रखा ही इस वजह से मैंने. Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family name. But we'll talk. Did you want? I must leave you. मैं इससे पूछता हूँ how he became a knot. कुछ ऐसे तो नहीं है यहाँ पर कहीं पर जाना है. ये बंदा इधर ही है. Let's just go to my place भाई. कैसे करूं भाई मैं तेरे साथ ये हैंडल? Isn't it impossible? ये लोग अपना खुद का ही बोलते रहते हैं. ये लोग अपना ही बोलते रहते हैं भाई. There is no way I can do this. Desarde, I've always hoped to one day find out my biological family name. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy.
सारे you want बटन anything दबा else? दिए भाई मैंने. No, I am not. I must leave you. भाई तू मेरी टीम से हट जा. Desarde, I've always hoped to one day. But how? We'll talk. Did you want? I must leave you. सिर्फ यही रीजन था भाई मैं जिसकी वजह से इधर आया. चलो भाई इन्वेस्टिगेट द मॉर्ग. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना. वेट, अच्छा पेट्रोस मेरी टीम में होना चाहिए ना. उसके लिए अलग अलग जगहें बताई है ना इनके लिए, जहाँ पे इनको हमारे साथ टीम पे होना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं है? यस, इट्स लाइक दैट. कहाँ है भाई हमारा पेट्रोस? वेट वेट, हाँ यहाँ पे ना. पेट्रोस, इसको हटाओ. अब जाएंगे ना, अब आया ना समझ भाई. ओके आई गॉट इट. इनके लिए इनके मिशंस पे जाना होगा ना. ऑफर हेल्प, तो कैसे हेल्प, कहाँ हेल्प करनी है? Have you considered my proposition? It is a very good idea, but alas, I have other problems to resolve first. I understand. Come and find me when you are ready. I had a meeting with Admiral Cabral concerning what we found in those ruins. She said she was bound by a pact that kept her from answering questions on the subject. The Nords are nothing more than mercenaries of the oceans. I suppose that she wants something in exchange. Effectively. She told me that her men posted at San Mateus met with some problems, and she advised me to speak to you. Does that make sense? I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who. A few of our zealous brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme, and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nords. We will need to speak with those on Teleme lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Teleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I'll see you later, Father. Take care, my child. अब समझ आया क्या करना है.
अब मुझे उधर जाना पड़ेगा ना, जैसे कि अगर आप जब तक आपके उसमें नहीं आता ना तब तक नहीं करना आपको, उनकी टीम में होना चाहिए ना। आप जितनी क्वेस्ट करोगे उतनी आगे जाओगे, ऐसा है, ठीक है ना बात। इधर है ना सैन मटेस। भाई 30 मिनट से एक भी मिशन नहीं किया मैंने आप लोगों के सामने, हद है। क्या किया डोंट नो। Desarde, I've always heard. We'll talk. Did you? अच्छा इन सब के बेस लगे ना इधर, तो ये हर जगह वुडन बेस आई थिंक। यार मैंने सही में पानी नहीं पिया, और आज तो पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना, मैं कोई सा भी गेम खेल लूँ, मेरे को 2 दिन से फुटबॉल खेलते खेलते लग रही थी, सोचा थोड़ा क्रिकेट खेल लेता हूँ। ऑब्वियसली मेरे को क्रिकेट इतने अच्छे से नहीं आता एज अ फुटबॉलर, ठीक है ना। मेरे को जो आता है वो मैंने तभी सीखा था जब मैं लाइक पहले खेलता था, बहुत पहले खेलता था। लाइक 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने क्रिकेट खेला था लास्ट अच्छे से टीम से, बट फिर उसके बाद मैंने खेला ही नहीं, लाइक बहुत कम टाइम, बहुत ऐसे जब कुछ मिल नहीं रहा, कोई है नहीं ना फुटबॉल खेलने के लिए तब। वैसे मेरा मेन होता है फुटबॉल ही हमेशा, कि भाई मैं फुटबॉल ही कोशिश करूं, बिकॉज इट्स, ठीक है ना। बट जब मैं खेलता हूँ ना, लाइक आज मैंने अकेले बना लिए 20 रन और फिर मैं आउट हो गया, क्योंकि मेरे को नहीं आता खेलना इतने अच्छे से। मैं क्या करूं, मैं थोड़ा उस टाइप का सा हूँ, मुझे आता नहीं है ठीक से खेलना, वही बात है। लाइक खेल लेता हूँ मैं, कोई दे बॉल, मेरी बॉलिंग भी भट्टा जाती है, कोई खेल नहीं पाता तो लोग सोचते मैं अच्छा खेलता हूँ। लाइक एक या दो बारी में बंदा चला जाता है आराम से। लाइक मैं आराम से विकेट लेने में अच्छा हूँ, सिर्फ बॉलिंग में तो मेरे को इतने दिनों से लग रही थी इतनी ज्यादा, तो मैंने सोचा खेलता हूँ, आज स्टिल लग गई। इतना दर्द हुआ था ना, बहुत दर्द हुआ था। लाइक 2-3 दिन से लग रही थी ना हाथ पैर में, तो मैं आज जल्दी आ गया। लाइक वैसे मैं 3-4 घंटे खेल लेता हूँ आराम से, PS4 नहीं, यही आराम से 3 या 5 घंटे आराम से। एक बार मैंने 4 घंटे खेला था नीचे, 11 बजे से गया था, 11 या 12 बजे से, और 2 बजे आया था। 11 या 12 ही बजे थे। Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their इसका आर्मर पता है क्या लग रहा है, जैसे इसने ना एक शील्ड लगा ली थोड़ी सी तोड़कर। As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Yes? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive,
and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in the stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? I'm kinda confused here. I don't get it what he said. Is that bullshit or somewhat? Because I can't. भाई क्या बक रहा था ये आदमी? नॉट होते वो सिंपल वो शिप वाले. भाई इस पर कोई केस करो, सही बता रहा हूँ मैं. इस पर कसम से कोई केस करो आज. एक्चुअली मेरे को इससे याद आया कि जो वासु है ना उसके पास एक वो है, तो मैं सीक्रेटली घुस सकता हूँ. ठीक है ना, मैं सीक्रेटली घुस सकता हूँ. एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कितनी पास है मेरा घर. मैं सीक्रेटली घुस सकता हूँ, इसके कपड़े ले सकता हूँ. और ये वासु जो है, अबे यार फट गया. Oh man, I'm kind of. चलो ये इधर हम गए वासु. ये जो सेलर कोट है इसको हम ये दे देते हैं, और जो हम खुद हैं हम वो पहनेंगे ये वाला, नहीं ये कमांडर वाला. और फिर हम लोग नॉट्स के एरिया में आराम से एंटर हो सकते हैं. ये मेरा अभी के लिए प्लान है, ठीक है ना. बाकी मेरे को देखना पड़ेगा. थोड़े ऐसे रास्ते लेना जरूरी है. इधर कुछ भी हो सकता है बोर्ड पर ना, अभी कुछ नहीं है. लास्ट टाइम एक बोर्ड पे मेरे को कुछ दिखा था, तो अगर मैं नहीं ऐसे ना, ऐसे ना, नहीं इधर वो है ना. I need your. अब तो राइट पार्ट पता ही है, राइट पाथ. Thinks I'm gonna. भाई क्या सीक्रेट है ये? पता नहीं, ये लोग गवार हैं. Good day, Desade. How can I help you? Desade? I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nords. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More कुछ तो है. कुछ तो है. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the North's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. तो इधर एक डोर है जिधर से जाने के लिए हमारे को इधर से जाना होगा.
ये बहुत ज्यादा सीक्रेट जगह है। देखा नहीं आया, मैं घूम सकता हूँ अब कैसे भी। ये लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने इसका कपड़ा पहना हुआ है, नहीं तो रेपुटेशन लो हो जाती मेरी। No, this is not the place. Can't. No, this is not even a place. अगर मैं मेरे को हर चीज के देख। No, this is not it. मुझे इधर नहीं जाना। इनको कैसे बताना, जब तक ये लोग देख नहीं लेते ना मेरे को विद लाइक प्रूफ कि मेरे पास है, तब लाइक मैं प्रूफ जब तक कि मेरे पास प्रूफ कि मेरे पास है कुछ, कि मैं फांद के आया हूं, मैं एक नॉट नहीं हूं। नॉट हियर, ये कोई साइड वाला है। वेयर इज दैट फ्रिकिंग थिंग भाई? यार मैं ना ये इधर है, वहीं से देखा, मुझे पता है, बट हाउ डू वी गो हियर? देख रहे हो उधर ओ पिस्टल। There is a room. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. देखा ये वासु की चीज कितनी हेल्प कर रही है। मेरे इधर एक वासु भैया है, मैं इसको वासु भैया ही बुलाऊंगा अब। इधर से आया हूँ क्या मैं? बस कोई भी ऐसा डोर दे दो भाई जो खुले। मैं नहीं, जो मेरे को देखेगा ना फांदते हुए, वही उसको वो हो सकता है कि भाई ये कौन है, उसको शक हो सकता है कि ये कौन है, ठीक है ना। उसको मेरे पे शक हो सकता है कि ये कौन है आदमी।
बट जो बंदा एक्चुअल में नहीं देखता ना, देखो कोई भी नोट नहीं आएगा इधर। भाई एक्चुअली में हैंगर वो नहीं होते जिनके अंदर एक्चुअली में लाइक वेयर हाउस डी। पहली चीज तो मेरे को यहीं पे मिल गई। मैं इधर आया हूँ एक्चुअली में। I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. Nothing magic nor impure therein. They're nothing but measuring instruments. भाई ये टूटेगा नहीं क्या? These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Oh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? These instruments are incredible and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I've definitely found nothing related to the malady. भाई मेरे एक बार लेफ्ट में आ रहा है, एक बार राइट में आ रहा है और फिर एक बार दोनों में आ रहा है कानों में। Imagination and the taste of Nort's secrets get the best of him. ये उर्दू है? कौन है ये? ओर्डो क्या है? कैसा नाम रखते हो यार? नाम तो ठीक से रख लिया करो ना। लाइक इंसान कंफ्यूज हो जाता है। पता नहीं कौन सा गवार है ये। ओर्डो और दो अब इसको और दो से बुलाओ। यार ये सही में इंसान है। लाइक कोई लिटरली किसी को नहीं पता चलेगा इंसान का नाम है। सबको लगेगा ये कोई डॉग का नाम होने वाला है आई थिंक। और दो यार डॉग्स के नाम होते हैं इससे अच्छे तो। एक बताओ कुत्तों के भी नाम अच्छे होते हैं इनसे। और दो वेट व्हाट इधर लिटरली कुछ भी नहीं है। ओके गो फ्रॉम हियर। सैन मटेयस। ये पनिशमेंट वाली जगह का नाम नहीं है। और भाई इसके लिए तो बड़ा बुरा लग रहा है। आदमी जल गया कसम से। और इसको बांधा कैसे भाई वहां पर? अगेन चर्च में एक्चुअली में कोई इधर एनीथिंग भी भाई इन चर्च चीज नहीं है जो चर्च में हो भाई। चर्च में किताबों वगैरह के अलावा क्या होगा? कुछ होली बुक्स एंड ऑल दैट स्टफ के अलावा चर्च ही लग रही है मेरे को। देखो मैं तो क्रिश्चियन हूँ नहीं तो बता नहीं सकता बट चर्च टाइप है तो आई थिंक वी कैन से दैट। ये बंदा मैजिक ही यूज करता है। This place was heavily guarded. किताबों में भाई मुझे अभी तक We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. तो सिर्फ यही था और फिर से नहीं आना? बट यहाँ पे गार्ड क्यों रखे थे? आई थिंक इस लेटर को बचाने के लिए या दैट्स द ओनली रीजन। और यहाँ पे एक भी डोर नहीं है
सिर्फ एक वो डोर है, उधर तो देख लिया, तो उधर कोई लेटर नहीं था। देखा, इस जगह का नाम प्लेस ऑफ पनिशमेंट है। मैं ऐसे चलने वाला हूँ बुरी तरीके से। अब कैसे चल रहा है? और स्टेयर्स है। थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ। भैया दौड़ता तो बड़ी तेज है। Yes. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. There were neither idols nor objects of any ritual, nor even anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naught building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, Your Eminence. Until we meet again. Reputation. Theleme. So I think we put this to an end. Think so. अब मुझे अपने घर जाना है। ये ऐसा नहीं लग रहा जंप मार रहा है, जबकि इसको जंप मारनी आती नहीं है। Come closer, good people. Come closer. नहीं, ये यहाँ पे जाना है। देखा, मुझे सब याद रहता है obviously. जैसे नहीं, जैसे जैसे मैं एक एक करूँगा ना, वैसे वैसे होगा। Talk to father, Luce. इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर से ही कुछ जगह मैंने अभी तक देखी नहीं ना, कुछ जगहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकता है कुछ, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है भाई। इतने बड़े आइलैंड पर कहीं पर भी विलेजेस हो सकती हैं। नोबडी नोज। फॉर एग्जांपल ये जगह, ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता। द एंशिएंट वुड्स है। फाइंड द हार्ट रॉकेट्स। सबसे पहले मैं इस जगह का भी देखने वाला हूँ। इधर नॉट्स अभी स्पॉन हो चुके होंगे, ठीक है ना। इधर स्पॉन हो चुके होंगे, मैं उनसे फिर से लड़ने वाला हूँ। मैं बस फिलहाल तो इनके पास कुछ होता नहीं अच्छा। और उस बंदे से मैंने सोचा था कि मेरे को कुछ अच्छी रिंग मिलेगी, बट आई डिडंट गेट इवन अ पेनी ऑफ समथिंग भाई।
मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड मिली अच्छी खासी, कुछ नहीं, वो भी लेजेंडरी थी, बट इट लाइक वो मेरी एपिक से भी घटिया थी, जो मेरी एपिक स्वॉर्ड है उस चीज़ का। मेरे पास दो चीज़ें ठीक है ना एपिक में, स्वॉर्ड्स लाइक स्वॉर्ड्स वगैरह में मारने की चीज़ें जो हैं, एक है, एक जो एक्स है वो जो पड़ी है मेरे पास, और एक जो दूसरी सी जो है, क्या था वो, बहुत कम चीज़ें पड़ी हैं इससे। Desarde, what can I do for you? I've settled the problem in San Mateus. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you another. We discovered this island nearly 2 centuries ago. A few decades later, we sold the discovery to a nation of merchants. भाई 2000 साल पहले. Our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but मुझे समझ आ गया क्या हुआ था. वो जो हमने वो जो इतने बड़े-बड़े वो जो देखे थे ना, इतने बड़े beasts came out of the woods and जो destroyed the new cities. जो मैंने एक्चुअली में जो मैंने लाइक क्या कहेंगे, जो मैंने वो जो पुरानी फोटोज एंड ऑल दैट स्टफ होता है ना, वो चीजें मैंने देखी थी. Your princes paid us well to keep their secret. They continued to make the occasional expedition. You are in fact a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born on one of our ships. The child of an islander? But I know who my mother is, and... I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. I am sorry for the shock I have caused you. You asked me for the truth, and now you have it. Anything else? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. My child, I understand that this revelation is upsetting. I wish I had the right words to comfort you. भाई this is भाई तुम literally मैं एक्चुअली मैं लिटरली 20 साल का ये आदमी, मैं 20 साल से मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ. Who am I? Why am I? ये वाले क्वेश्चन इसके दिमाग में अभी आ रहे होंगे. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. I will die, like your mother, and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin,
Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out! Everyone out! It's an order! Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did once attempt to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There were a great many bloody battles. Few colonists survived. The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not... your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father, lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Kurt, what is... what's going on? Is there something wrong? Coin guards! The time has come. But... what is this? Ready arms. Kurt, what are you doing? Aim! Stop that, soldiers! Lower your weapons, now! Sorry, Greenblood. What? Fight with honor. On guard. I said draw! Stop it, Kurt! Wait! Speak. Why did you betray us? Our commander figured out that we could easily take control of this island. You rely so heavily on our protection. You are so dependent. So naive. All the governors will suffer the same attacks if they haven't already. Your problems are far from over, Greenblood. The commander is there on the docks with all his lieutenants. I failed, but they will certainly succeed. Here, or elsewhere on the island.
Not every governor has a cousin that I trained personally for combat. इसके पास ऑरेंज ब्लड है। Thank you. You saved us all. The nerve of them. What else was there to expect from employing coin-fed mercenaries? All that liberty, so close to power, it went to their heads. It would have happened sooner or later. They could have been preparing this sort of coup for years. भाई बहुत हो गया. Let's start a war now. Shadow of Mordor here. We will start Shadow of Mordor here. Obviously अब आप सोच रहे होगे Shadow of War को मैं Shadow of Mordor क्यों बोल रहा हूँ? So एक मिनट इसको बोलने दो. Me, I want to join in. Look at your condition. It's out of the question. We are taking you somewhere. इसके हाथ देखो, ऐसा लग रहा है रोटी बना रहा है. There is a hiding place in the cellar. We will take care of your advisors after that. And we should make these conger eels pay for their treachery. And attempt to stop the coups in other cities. तो अभी ये क्या है यार, सही में कैसे धोखा दे सकते हैं तुम मेरे को? ये सही में मेरे को इतना गंदा धोखा कैसे दे सकते हैं? कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? आई डोंट हैव एनी मेंटल पावर इस बंदे के पास है. ये बंदा बहुत ज्यादा है. जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाली है ना, स्ट्रेंथ 1 है इसके पास, तो मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ. वासो एजिलिटी एक्यूरेसी एंड्योरेंस 1 है. ओके कंफर्म. These traitors will not be shaken by Kurt's death for very long. They are most likely gathering as we speak to prevent us from accessing the cellar. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must hurry before the guard can act. अबे यही एबिलिटी तो उसके पास भी है. यार कभी काम नहीं करता ये, जब चाहिए होता है ना. अच्छा इन्होंने पूरा अपने अंडर कर लिया. Don't tell me there is. Bit of poison on my blade. Then let's go! Let's see if you can ward off this fate! Lord Minister! Ah, friendly faces finally. What a relief. I was in this room when I heard sounds of battle. Fearing for my life, I hid myself in here. But what is going on? What madness has befallen the palace? It's a coup d'etat. The Coin Guard wants to take control of the island by assassinating all its governors.
The guard is everywhere. They could succeed. We will do everything in our power to thwart them. Come now. We'll take you somewhere safe. I'll follow you. So I have total 12. Okay. Okay. We're down. There is actual way here. Poison on my blade. Then let's go! केयर ना भाई और ये लोग कुछ भी डैमेज नहीं कर रहे हैं ज्यादा हम लोग कॉन्स्टेंटाइन से काम नहीं करवा रहे We've reached the cellar. It looks like a good place to hide. Constantine, promise me that you will stay here until we secure the city. Do I even have a choice? Here I am, consigned to my quarters like some broken old maid. Like someone ill, Constantine. Someone sick who is dear to me, and the city wouldn't survive your loss. You have such a way with words. Very well. I promise to stay here, obediently awaiting your return. Let's go then. And cousin, watch out for yourself. You are dear to me as well. You are safe here. You have my eternal gratitude, Excellency. We owe you our lives. ना who the hell are we भाई मैंने इतने सारे लोगों को आराम से उड़ा रखा है ये लोग लिटरली सोचते हैं कि ये लोग मेरे को कुछ करके उड़ा सकते हैं ना Wait, what the heck? I just oh man, it's what भाई endurance 3 चाहिए okay अभी इसकी जरूरत नहीं है I'm good to go This is the best thing I have actually. Oh man, okay. I can. मुझे ठीक से तैयार रहना है भाई. I have won, and now it's time to do this. Just level 17 होना है, and I'll be okay. Just my level 17 होना है. मुझे बस लेवल 17 होना है और कॉइन गार्ड कर भी क्या लेंगे वो सारे मेरे से कुछ ज्यादा ही वीक हैं दे आर द वीकेस्ट ठीक है ना ऊपर है ना इससे एक प्लेस दोनों सेम ही जगह जाती होंगी कोई और तो है नहीं जगह Protect me in this battle. Let's see what you can.
to ward off this fate. I am but a man of ink and will. Maybe enlightened protect me in this battle. May the shadow engulf our enemy. Lord de Cossillon! De Sade, you've come at a serendipitous moment. I thought my hour had come. What's happening? A coup d'etat, Professor. The coin guard भाई tried to बहुत हो assassinate गया. my cousin and is plotting Let's the start same Shadow of actions against Mordor. the अब other governors. मैं बताने वाला था Shadow of War कैसे है ये. So एक्चुअल में मैंने क्यों बोला Shadow of Mordor, तो एक्चुअल में सेम ही है क्योंकि वो पूरा एक मोर्डोर का आइलैंड है, तो it's kind of same. We should have paid more attention to your lessons. We might have been able to avoid all of this. Follow me. I'm taking you somewhere safe. I'm coming. यार पूरा फिर से coup d'etat. I think this is the yep. Bit of poison on my brain. Maybe enlightened protect me in this battle. Show you what got. भाई ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, इससे लेते कुछ. बस कुछ भी नहीं, सबके पास एक सिल्वर सिंगेट रिंग है. बस कुछ ना मिलता. तुम सोचो ना कुछ मिलेगा. और ये लोग इधर कर क्या रहे हैं? मेरी बंदे हैं लोग, अच्छा सेफ हैं. अगर ये लोग यहाँ पे तो वो लोग क्या कर रहे हैं उधर? सबसे पहली बात तो ये है, या पहले से ही होंगे आई थिंक. अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में गए नहीं है, तो अब तो आई थिंक पूरा महल कवर हो चुका है. पूरा महल हो चुका है कवर. उनको पता ही नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये है. Is this even a place, bro? मुझे पक्का याद है मैं इधर ही कहीं. अच्छा ये है ना. इधर इतने सारी ऐसी चीजें कैसे पड़ी हैं? मिस्टर काउंसलर. मिस्टर काउंसलर. You will be safe here. Thank you, my friend. I will never forget what you've done for me. In that case, we should find her at once. Her abode is very close to the palace. हर कोई लड़की है थे, हर गर्ल्स के लिए होता है. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती जब से इसने हर बोला है. ये भाई वेयर इट्स समथिंग. ओह मैन, मुझे याद क्यों नहीं रहता मैं इधर से आया हूँ.
हाँ मुझे लग रहा है मेरे को खांसी आने वाली है, थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रीम के अलावा कहीं नहीं बोलता इतना ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बिना माइक के भी स्ट्रीम करूँगा ना तब भी मैं बोलता रहता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी कमेंट करने की अच्छी आदत पड़ी हुई है। लेडी मोरांश, इनके से डैमेज भी नहीं लगता भैया। Lady Morange, make ready to depart. We cannot remain here. But what is going on? The Coin Guard has decided to take control of the Isle. They plan to overthrow the governors. They were set on assassinating Constantine and his entire entourage. The idiots! You are in danger. Do you know a safe place where we could take you? Don't worry about me. I have friends here. They will hide me. Go! And do be careful. If I remember correctly, Torsten's quarters are in the right wing. Going in through the front door would be dangerous. The noise of the battle could make him run away. You're not wrong. If we're to stop him, we'd better be discreet. I believe there's a passage leading to the barracks in the tavern. We could use it to our advantage. We could also climb up the left wing scaffolding. We'd reach the upper floor directly. Protect me in this battle. Come on, if you dare. And let's go. May the shadow engulf our enemies. चरिश्मा मेरे पास पड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, लॉक पिकिंग करूंगा तो लॉक पिकिंग 2 आ जाएगा मेरे पास यार। आई डोंट हैव एनी, आई डोंट नो टू क्राफ्ट। आई डोंट नो भाई मैं क्या करूं। लेट्स जस्ट डू लॉक पिकिंग। तो जैसे कि लॉक पिकिंग 2 आ जाएगा, फिर इधर सेरीन में, न्यू सेरीन में ही एक जगह है एक्चुअली में, they will die. Let's see what you're capable of. Let's see if you can ward off this fight. May the shadow engulf our enemies. Come on, if you dare. Be careful. They are kind of more powerful than I thought. I think I shouldn't be here by the time. I don't think so. मुझे वो मिशन करना चाहिए था, स्टोरी में वही होता है। और मैं स्पेयर भी क्यों करूं? ऑल उसने बताया था, रेड बैग ने, ऑलवेज किल द मैसेंजर, एंड ही वाज अ मैसेंजर टू। Torsten's quarters are in the right wing. Going in through the front door is dangerous. The noise of the battle could make him run. You're not wrong. If we're to stop him, we better be discreet.
Come on, if you're dead. We could also climb across the level scaffold. If we reach the upper floor directly. Let's see if you can walk this fate. Come on, if you're there. Come on, if you're there. Come on, if you're there. भाई हाय नहीं मुझे अभी दिखाई दे रहा है भाई। हाय भाई, हाय भाई, हाय भाई। और अभी मैं सेव करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनसे फिर नहीं लड़ना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी के लिए, जल्दी से हो जाइए। मुझे पता है बट करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट, आप सब कुछ सुनाई देगा। नो तो 2 स्किल पॉइंट है मेरे पास अब। डन। I need to go from here. They are more powerful than anybody can think of, bro. अरे इधर ही कहीं पे था ना, इधर ही कहीं पे था वो। यहाँ पे एक सीढ़ी है, if I'm correct here। यहाँ पे एक सीढ़ी है और इधर एक वो है जहाँ पे ये है। तो अभी हम जाएंगे इधर, जस्ट इन होप कि हमारे को कुछ अच्छा मिले, क्योंकि ये डैमेज वाला कभी काम नहीं करने वाला। अब 320 वाली तलवार चाहिए, अब एंड्योरेंस 3 चाहिए। Oh man, I just did। Are you serious भाई? कुछ भी अच्छा नहीं, सही बता। ओह ये अच्छी थी। एंड्योरेंस 3 चाहिए। एंड्योरेंस 3 नहीं है मेरे पास। मेरे पास एंड्योरेंस 2 है। एंड्योरेंस 2 अभी चाहिए, समझ रहे हो ना। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ये चाहिए मेंटल पावर 2, जिससे कि मैं कुछ कर पाऊँ। बट हाउ टू? मेरे को लेवल 19 होना पड़ेगा। हाउ कुड आई जस्ट गो थ्रू? एक और ड्रैगन ब्लड मिला। मैं इधर से घूम के जा सकता हूँ। यप, इनको हराने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट एंड द सेफ वे आई कैन डू। या ऐसा तो नहीं ये लोग कुछ छुपा रहे हैं? हाँ बोला भाई, हाय हाय बोला मैंने, हाय बोला। पर मैं इनसे लड़ूंगा कैसे? इनसे लड़ूंगा कैसे? मैंने बोल दिया भाई, हाय बोल दिया। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना कौन बोल रहा है।
मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 लाइव चैट दिख रही मेरे पास। ये जहाँ खड़े हैं वहीं पर है। I think I have no other choice but to fight them. Man, they were really easy, bhai. They were kinda really easy. That's how we say it. Steel Dragger. I got something good, but मेरे पास agility नहीं है, obviously भाई इसको use करने के लिए, तो I can't do anything. वैसे अगर आपको पता नहीं हो, ये जो लिख रहा है ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है मेरा ये। इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए जिससे कोई बंदा बाहर से ना आ सके। और ऐसा क्यों हो गया था? आई थिंक वो लास्ट वाला उधर भाग के जाता है। थिंक सो इट्स लाइक दैट। और मेरे पास कितना सामान है? आई टोटल हैव 240। अच्छा 200 ही मेरी बैगेज स्पेस है, अगर मैं उससे ज्यादा रख लेता हूँ तो ये होता है। ऑब्वियसली मेरे को एजिलिटी 4 चाहिए, बट कोई यूज भी है। 1 हैंडेड ब्लेड्स मैंने अच्छा किया खरीद लिया, बट वेयर इज इट? एजिलिटी, दिस इज एजिलिटी। मुझे टोटल इधर 5 तक है, मेरे को 4 तक जाना पड़ेगा अगर मेरे को इसको यूज करना है। और जो दूसरा है जो एक्चुअल में इससे थोड़ा सा गंदा है, लिटिल बिट, वो बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है ना। ये वाला जो ये थोड़ा सा गंदा है क्योंकि इसका आर्मर डैमेज बहुत ज्यादा कम है, एलिमेंटल डैमेज बहुत ही कम है, स्टन इसका बहुत कम है, सिर्फ फिजिकल डैमेज से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। दैट्स द प्रॉब्लम। I think this is it. What? They are not actually fighting me. I think कुछ ही लोगों को बोला होगा ना। तो इधर भी फाइट मिलने वाली है। मैं इसी डोर से नहीं आया था अभी ना, मैं दूसरे डोर। वे बहन जी हट जाइए। मुझे इधर से घुसना है। यप, इधर से हम घुसे।
और पक्का पता है भाई इधर लोग होने ही वाले हैं, या फिर उनको लग रहा होगा इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लगाई है कोई होगा नहीं। एक बंदा तो मिलना चाहिए भाई, एक बंदा मिलेगा। No one. I hoped he would be here. We should take What? a look at these papers. भाई मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। Information there. Your order were carefully followed and are ready to. The traitor had a contingency plan. He must be boarding a ship to another city as we speak. The Admiral certainly can't be aware of his plotting. She would never support it. I thought as much. She would have too much to lose. According to these papers, Torsten was counting on some other officers to lead the attack. We must stop them too. What are you doing here? Who let you in? I demand an explanation. It seems that your men are a little distracted this evening, Lieutenant. It is understandable, with all that's been going on. You are under arrest, as well as your commander. But what is this? Soldiers, ready weapons. Put a poison on my blade, and let's go! Maybe a likely protecting in this battle. भाई ये ना एक्चुअली में वो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, लाइक बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है। इधर भी चाहिए मुझे ना लॉक पिकिंग 3। देखा बहुत सारी जगह है लॉक पिकिंग 3 के लिए। जो मेनली चेस्ट होती है वो लॉक पिकिंग 2 के लिए होती है। सबको पता है भाई, आप लॉक पिकिंग आराम से कर सकते हो, 2 तक आराम से आप कर सकते हो। एक आप शुरू में ले लो और एक फिर ये इसकी ले लो उस बंदे की, हो गया लॉक पिकिंग 2। भाई क्या समझ रहा है, बहुत इजी है लॉक पिकिंग 2 आपके लिए, ठीक है ना। इस वजह से कुछ जो मुश्किल I should probably have taken more heed of him. He was my master and my friend, and I did not listen. What a waste. हर जगह होने वाली है ऐसी सिक्योरिटी। It's impossible to run here. कॉइन गार्ड अभी हम नहीं कर रहे। This is gonna be a real time. I'm over carrying things, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है, तो मेरे को इधर जाना है। भाई अभी बैड पीपल सारे आएंगे तेरे पास। तो इधर जो नीले वाले गार्ड्स हैं उनको नहीं किया, जो सफेद जिन्होंने पहना है, आई मीन लाल जो है, वो लोग ट्रेटर है। Too late. The coward has escaped. It's not over. We need to warn our allies. I beg you, my child. We cannot let San Mateus fall into the hands of these traitors. What spiritual force will remain then to face the evil of this island and the deceit of the Alliance? One thing is certain, we cannot save them both. You will need to make a choice between the two. Very well. Let's go to San Mateus. ऑब्वियसली मैं हिकमत को नहीं बचा सकता। हिकमत में एक्चुअल में अभी बहुत सारी चीजें हैं।
हिकमत वीक है और वहीं सैन मटेयस कह सकते हो मेरे ग्रैंड मदर फैमिली की जगह है। लाइक ऑब्वियसली किसी ने मेरे को अडॉप्ट किया था। अभी ये भी पक्का नहीं क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं आई वॉज सी बॉर्न, कुछ लोग नहीं सभी लोग यही कह रहे हैं कि आई वॉज सी बॉर्न, पर किसने किया भाई? Beg your pardon, Excellency. The city is encircled for their protection. No one can enter. We shall make no exception. For their protection? Traitor, you have some nerve. Warn the guard! Anyone like to protect me in this battle? Bit of poison on my blade. And let's go! Let's see if we can ward off this traitor. May the shadow engulf our enemies. This is gonna be their end. यार अब मुझे रोना आ रहा है थोड़ा। I don't think so this palace will be mine. What's the matter? What just happened to you? Ah, sir. Those guards. Can you believe those ruffians threw us out? For needs of security, they said. Can you imagine that? As if I could ever be a source of danger. I've served Her Eminence for 8 years, and no one has ever complained of the quality of my service. My daughter, gather your wits together. There is no cause to lose your nerve. Father Petrus, it is you. You are right. Forgive me. Do you know why they are behaving in this way? These soldiers are making ready to attack the Mother Cardinal. They shut the palace, you say? By the Enlightened. Yes, yes, all is locked and barred. But you have the key to the service entry, don't you? Yes, of course. But there are a great many of them inside, Father. Oh, Saint Matthias, protect us. Pray for us, my daughter. And give us your key. We shall take care of the rest. I think you must all be coming. भाई ये okay. We better find another entrance. We want to have the element of surprise. There is no other way, भाई. Poison on my blade. And let's go! Techniques. May the shadow engulf our enemies. We're inside. Now we must hurry and find Cornelia. May the Enlightened keep her in his divine blessing. Oh, भाई this. May the Enlightened protect me in this battle. A bit of May the shadow engulf our enemies. I'm not even carrying, भाई. Come with us, milady. All resistance is futile. May the light guide my hand! Catch her! You won't be going any further, Governor.
trident have heard my prayers. Too late for my retinue, alas, but my counselors are without doubt still alive. These soldiers said that they were holding them on the second floor. Might I once again call upon your help? Free them, please, but do be prudent. The palace is undoubtedly still slithering with traitors. Be discreet. The slightest sign of foul play could push them to kill their hostages. Do not fret. I will handle this. सारे डाउन ले पे हैं. सेकंड फ्लोर कहीं और से, आई थिंक दूसरी जगह से होगा सेकंड फ्लोर, यहाँ से नहीं होगा. I've never been here. Who knows भाई कहाँ जाना है. I don't know भाई. Come on, if you're there. Let's see if you can ward off this fate. भाई this is kinda what the heck I can say. This floor is locked भाई. इधर कुछ तो होगा इधर. मैं कुछ उठा नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरे को कुछ उठाना नहीं है. Not here either. Then it should be मुझे कुछ only thing there is this floor. जैसे मैं इधर से जाऊंगा Protect me in this battle. Poison on my tail. And let's go. See if you can ward off this fate. मुझे पता मैं उठा नहीं रहा हूँ बहुत सारी चीजें. एंड्योरेंस 2 चाहिए. क्यों उठाया मैंने.
ऐसी जगह भी होती है पैलेसेस में, didn't know that। जो मैजिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसके पास हीलिंग वगैरह की पावर हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मेरी वो थी दूसरी जो थी एक लड़की, कौन थी, आई डोंट नो हर वेरी वेल बट या देयर Poison on my blade. Then let's go! And the shadow engulf our enemies. I think they were the last. The palace is liberated. No, let's just go. Ah, Your Excellency. I am happy to see that you are alive. Is the danger past? Yes. The last traitors that took the palace have fallen. You have nothing more to fear. I am infinitely grateful to you for your help. I have received reports that the fighting in the city has also ceased. The seditious faction of the Coin Guard have been arrested by a contingent of their brothers in arms. They were firm believers and refused to participate in this infamy. I also learned that Hikmet has fallen. The Bridge Alliance lost its city to the traitors. I can't really say that I regret it. The Bridge Alliance being our enemies, I would have preferred that these brutes had failed and that their commander pay for these crimes. Without your providential rescue, we would have suffered the same fate. I shall never forget what you have done for this city and for me. May the Illuminated bless you. Please, give your cousin these same words of gratitude and the assurance that more than ever, we are allies. I shall not fail to do so. Goodbye, Your Eminence. लेवल 18। वन मोर थिंग, देखो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। डिवाइन मैजिक रिंग एनीथिंग। लॉन्ग ब्लेड्स, अच्छा 1 हैंडेड ब्लेड्स मिली है ना मेरे को कुछ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1 हैंडेड ब्लेड्स चाहिए ना, ओके। बस मेरे को एजिलिटी 4 चाहिए किसी भी हालत पर। लेवल 19, ये भी लेवल 19। एजिलिटी 4 चाहिए। अभी मेरे पास एजिलिटी अभी मेरे को एजिलिटी 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। इट्स गोना बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली मैं मैजिक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ दूर के लिए यूज़ करता हूँ। लाइक ज़्यादातर मैं मैजिक यूज़ करता हूँ, द ट्रूथ। बट मैं बहुत ज़्यादा तलवार यूज़ करता हूँ बिकॉज यू कांट यूज़ मैजिक एज योर लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना। यू कैन ओनली यूज़ तलवार एंड ऑल दैट स्टफ। मैजिक तो सिर्फ आप दूर से, अगर कोई बैल वगैरह वो तो बिल्कुल नहीं होने वाली, एक हल्का सा चांस हो, बिल्कुल इतू सा चांस। सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस वुड, बट दिस हैज कॉज्ड मी अ लॉट। इधर कुछ भी नहीं है। भाई सबसे पहले तो घर जाना है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया।
वो लोग आयरन से चले गए। अगर हल्का सा मैं हो जाता ना, आई थिंक इट वुड हैव। I'll go here after talking to Lustius. ये Lustius है कौन? Anyway, वही होगा वो Lustius. Your Eminence, I salute you. Sir de Sardet, what can I do for you? Who are the missionaries? It is an order that aims to convert people. You must have met some of its followers in Serene. Most of them leave the comfort of Thélème to visit other countries, to spread the good word. This once and has established itself in politics in the high... I must leave you. That... May the Enlightened bless you. This is gonna be a bad idea. Petrus. Have you considered my proposition? What was it again, precisely? I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless. What do you have in mind? Diplomacy, if we had the... How could we ever find anything of that? Everyone has nasty little... Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it.
But how are we gonna do that? But how are we gonna do that? Is that even possible? Ah, we need to be up on the floor. Because उधर से कोई रास्ता नहीं है, उधर से नीचे जाएंगे. देख अगर हम मरे तो भाई कांड हो जाएगा. That's प्लान तो इन भाईजान का बड़ा अच्छा सा है. बड़ा अच्छा है इस भाई का प्लान. तो एक है Yep, there it is. नहीं किसी को क्या पता भाई कहाँ की है. जब हमारे को पता है कि कहाँ पर है, उसने बता रखा है ना कि कहाँ पर है. आई थिंक यही होगा लेटर पर. बिकॉज मैंने पढ़ा तो नहीं है. मैंने पढ़ा नहीं है. Where the heck is that place भाई? हाँ पता था नीचे है. बट ऐसा कोई सीक्रेट रूम तो नहीं होना चाहिए. This area of the palace is forbidden to visitors, by order of the Mother Cardinal. We did not know. Please excuse us. The basements are for servants only. Very well. We'll go back up. What can I do for you, my child? I'll see you later, Father. Take care, my child.
भाई ओ ये बंदा तो अलग ही है। मुझे एक पूरा अच्छे से प्लान होना चाहिए। तो मेरे को इधर से इधर जाना है। We did it. Oh, we did it. Ah, well. This is a very unique place. The smell of stupor and vice reign as its masters. You're not wrong. We should search this place. But how are we? अच्छा जैसे आए थे वैसे चले जाओ. For goodness sake. This room reeks of alcohol. And not just any old alcohol, if my nose does not deceive me. Cornelia always had great taste when it came to drinking. मुझे पक्का पता है मैं अभी तक नहीं करने वाला. कोई ना कोई तो इधर आएगा भाग के. It seems that someone forgot their earring. Here is an object of more than questionable taste. A woman from a good family would never wear it. It's junk. The kind of thing a courtesan would wear. I didn't know you were an expert on the subject, Father. The subject of jewelry? No, of courtesans. We are here at the heart of human depravity. Outrageous luxury, excessively priced alcohol, obvious debauchery. Surely this is enough to incriminate the Mother Cardinal. No, my child. These things are common in certain circles, even in Tuleme, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है और मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं. The earring that we found may help us with that. ये है. If it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps. This document is highly important. By reading it carefully, you could learn a lot. The Mother Cardinal apparently borrows large amounts of money from a moneylender. Actually, enormous sums. What's more, she does so quite regularly. How does she manage to give it all back? And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The moneylender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the moneylender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the manager knows him. Now the questions come कि अब हम जाएंगे कैसे? Because it's kind of impossible. इधर आया. We came without anything. वो बन एक्चुअली में अगर आपके पीछे से कोई चला जाए आपको बहुत ही मुश्किल से पता चलता है. Oh.
क्योंकि ना ये गेम एक्चुअल में इस गेम के अंदर ना अगर आपकी चॉइस गलत होने वाली है ना तो आपका पूरा गेम रॉन्ग जा सकता है। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, अगर गलती से अगर आपने गलती से गलत चॉइस ली सो आपका गेम बहुत गंदा चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको स्पेयर करता तो ये भी हो सकता था ही कैन किल कॉन्स्टेंटीन। Like I'm not really that sure, but there are chances of that to happen. तो मैं जहाँ से भी जाता हूँ हल्के हल्के से पेपर उड़ के आते हैं। गेम बड़ा अच्छा बनाया जिसने भी बनाया है। like I'm not good at these kind of things but yeah, बहुत ही अच्छा गेम है। मैं गेम सिर्फ खेलता हूँ, ज़्यादा अच्छे से नोटिस नहीं करता। इस गेम को मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ओ भाई साहब, मैंने देखा वो बंदा सीट से आया। Can I get you anything? I'm here for something else. Can I ask you a couple of questions? If you wish. What would you like to know? Do you think that the Mother Cardinal may have ever been here? Are you drunk or something? What can you tell me about a certain candy cane? Candy cane? Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here, nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they'd talk about him. You sometimes deliver goods to your big clients, isn't that right? Of course. The rich don't like to get drunk among mere mortals. And have you ever supplied anyone from the palace? Yes, that has happened. It suits them. And who places these orders? Well, a steward, of course. Don't you know how things work? A woman? Dressed in a long green cloak? No, the steward is more discreet. On the other hand, the person in the big green coat, the steward speaks to her sometimes. They know each other or work together. I have to go. I will leave you to your work. Can I get you anything? Look who it is. I feel that once again you're not here to support my business. I have to go. I will leave you to your work. वैसे कुछ भी आस्क करने के लायक नहीं है लीव करने के अलावा ऑब्वियसली। भाई सब लोग मोर्टल्स होते हैं, ये तो है नहीं कि भाई हर आदमी इमोर्टल है। मियर मोर्टल यार, कोई भी गवर्नर हर जगह का इमोर्टल लगता है, लेकिन मुझे तो कभी नहीं लगता कोई आदमी इमोर्टल होगा इस टाइम पर। There is nobody who can be immortal right now. Like, yeah, that's the truth. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desarde, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. What can I do for you? Nothing but just to leave me. Thank you. तो अभी ये इधर गए। व्हाट ये किसने लगाया?
question the innkeeper in San Maris. इससे तो क्वेश्चन कर लिए ना यार। मैं अभी भी घर नहीं गया एक भी बार। क्या कर रहा है बे? अभी भी घर नहीं गया मैं। तेरे से बात करते हैं। Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fights in arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I can find him? He often hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Has the Mother Cardinal ever come here to place bets? The Mother Cardinal? And why not Saint Matthias himself while you're at it? I must be going. Next time, then. ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ है। भैया ऐसे बोल रहा था ये क्या है? आई थिंक मेरे को नीचे ही रहना है थोड़ी देर के लिए। Coin guard barracks. There are many things that could be hidden in here. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. So, have you found what you were looking for? Let's just say that I'm gathering information. My treasures are worth their price. I promise you that you will get your money's worth. For you, I'm sure we can make a special arrangement. इधर चाहिए। Maybe later. You won't be disappointed. हाँ इंस्टीट्यूशन 1 मैंने लॉक पिकिंग ले लिया। लेवल 21 यार। So, have you? Let's just. My treasure for you. Here you are. Thank you, my lord. Thank you. Look, a new face. Huh? Oh, but wouldn't that be... Hello, Father. Oh, hello. We would like to know if you know who this earring belongs to. Is it maybe yours? Absolutely not. I am careful not to leave my belongings with clients, and I have no desire to answer your questions. That doesn't fall within my services. Very well. Goodbye. There are too many of you for me alone, my little lambs. Sorry, madam, but we're here to ask other favors of you. This question might seem a little surprising, but do you know who this earring might belong to? Why? It's mine. I lost it when... How did you get hold of it? Are you sure you want to broach that subject here? You're right. Come with me. Well, what do you want? Why are you giving me back my earring? You know where we found it, don't you? Obviously. I realized as soon as I got back that I'd lost it. I imagine your pimp does not know that you take part in these parties. He doesn't dabble in this at all? No. Do not say anything to him, I beg you. He's on my case enough as it is. Then I suggest you answer my questions. What would you like to know? Do you know who organizes these parties?
Not really, no. A steward pays me when I go, but I don't see anyone else, apart from the clients. You can't even give me a single name. No. The only person who sometimes speaks to this steward is a woman who is always wearing a green coat. She never takes part in the festivities, but the steward rushes over whenever she arrives. Could you tell us who you saw at the parties? Rich people, or better. They seemed very rich and important to me, but I don't know them. Do you think that an important person from Thélème could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father, I don't know the Mother Cardinal, but I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her, and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Admit it, you must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people, wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone, once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone, but he is of no real importance, and you've probably never even heard of him. It's the local moneylender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you, huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person, so his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. This woman in the green coat, could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important then. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Now what the heck I need to do, bhai? Haven't I already questioned this guy? Oh man, this is quite a lot work. Good day. Welcome. On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do. Others have less luck. But they do get the thrill either way, you see. And that's all that counts. What is this arena? It's a place of great people. I must be going. Next time, then. ऐसे को बोलता भाई तो ऐसा बोल रहे जैसे यानी क्या है कीपर इन San Mateus there's nothing I can do. Let's just go to the upper floor.
सेम ही तो है भाई। Quite far away भाई। और इन ऑब्वियसली सबकी सिटी अलग होती है, ठीक है ना, वो बात नहीं बिल्कुल। ओह मैन, मेरे को घर जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। कुछ तो बताओ, तो भाग नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास पैर भी नहीं है अब। मेरे है घर भी कौन। अच्छा, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। अब मैं अपना घर पहचान सकता हूँ, इधर है। What I have? कितना सामान है भाई साहब। ये भी है मेंटल पावर 3। अब इन्वेंटरी में दिखाओ। ये है ना, मैं ये सिर्फ, अबे मेरे पास 2 पड़ी है। फिर तो मैं उसी को लेने वाला हूँ। मेरे को इन सब की जरूरत भी नहीं है। अभी इसको मैं रख सकता हूँ, सिर्फ ये ना मेंटल पावर 3, ये मेंटल पावर, ये है मेंटल पावर 2, तो इसी जरूरत पड़ेगी बाद में। बाकी किसी की जरूरत नहीं, बाकी सारे बहुत ज्यादा कम वेपन हैं, ठीक है। आई थिंक नो, अभी मैंने वासों को नहीं रखा, निवासों को ही रखा अपने पास। भाई हम काइंड अ लिटिल बिट, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो ये है, दिस इज द प्लेस। मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी प्लेस ऑफ पनिशमेंट का नाम कुछ और ही हो जाता है। वैसे मैं एक बार देखना चाह रहा हूँ, मैं क्रूड ऑयल मैं खरीद सकता हूँ जरूर, ठीक है ना, कोई वो बात नहीं है। तो ये है, अच्छा मैं इसको कर ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल क्या है यार, सही में यार हद है। एक्चुअली में यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये सबसे बड़ी पागलपंती है
क्यों कर रहे हैं लोग ये गवारपंथियां? आज यही बात है, सिर्फ यही। मैन सही में भाई ये क्या है? ये सही में मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ मदद इनकी, जबकि यही लोग हैं जो कर रहे हैं यहीं से रास्ता। that's kinda अदर टॉपिक, ठीक है ना? छोड़ो अभी इसको, वो रही जगह। इतना ढूंढना नहीं है, ठीक है ना? किसी को बताना मत। ये यहाँ पे बंदे लड़ने वाले तो नहीं हो ना भाई तुम? ये बंदा तो मूर्ति लग रही है मेरे को। स्पीक टू Yes, ये actually. Can I I have a help small you? favor to ask. You don't look like you need money from me. नहीं। I'll get straight to the point. I नहीं। have bad news for you. For you? I know What? about the decadent तो अभी parties at the palace. I in know you them took part in them. तो अभी ये क्या है यार? हद है। Stop acting all innocent. I have all Had the evidence भाई, कैसे? Although your reputation isn't spotless, there are others who have a lot more at stake than you. Then what if you. I were to spread it around town that you boast about being there? तो यही बिल्कुल सबसे ज्यादा घटिया बात है, ये बिल्कुल गंदी बात है। तो ये बहुत ही अजीब सा है यार, क्या है ये? टॉक अबाउट मदर, मेंशन कैंडी के नहीं यार, सीधा करो, हद है। ये सही बात है बिल्कुल ही। I just know his name like everyone else. There are some rumors. His basement is the basement in the coin tavern. ये बिल्कुल ही अजीब बात है। तो ये क्या है? Arena fight which are beyond the very well. Yes. I even know how much. What I want to know is why. Why? I have no idea. Do you really think that my clients tell me everything about their lives? Does she still owe you money? No, she always pays me back on time, and with interest. Do you think she's plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah, the money's coming from elsewhere. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. And now let's go to else. मैंने बुक मार्कर को कर तो रखा है यार। इनकीपर को भी कर रखा है। अब ये है नहीं कुछ, एक्सेप्ट इट एंड रिजेक्ट इट वाला कुछ भी नहीं है। नेम फैम ऑफर योर हेल्प टू वासो चैंपियन ऑफ अरीना। I like to go to this place kind of, and now I can run freely. We can run freely now. अच्छी फीलिंग आ रही है। इतनी देर से ऐसे भाग भाग कर मैं थक गया हूँ। Come closer good people नहीं बोला। मुझे नहीं पता कहाँ भाग रहा हूँ मैं। I'm going so far from the place. Obviously वासु अपने आराम से, अगर मैं जो बंदा मेरे साथ है उस बंदे को कोई बंदा कैसे बोल सकता है? वो सोचेंगे कि मेरे साथ ही कोई नॉट होगा जिसने आर्मर पहना अपनी प्रोटेक्शन के लिए। That's the only reason. हाँ रीजन ऑब्वियसली सिर्फ एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन है। रीजन ऑब्वियसली मैं इधर गया था लड़ने। फादर लेस्टमस इधर है और फिर यहाँ पे है। वह यहाँ पे तो हमेशा ही आता है ना, इसमें कोई वो तो है नहीं। मुझे किसी जगह पर करना होगा इसको ऑफर अपनी हेल्प। कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे, जैसे कि जो फादर हैं जिनको मैंने बोला था उनको उनके पास एक्सेप्ट का ऑफर आया था, एक्सेप्ट द डिक्लाइन। तो मैंने एक्सेप्ट किया।
So for God's sake we will gonna accept that job because जितने मिशन होंगे उतनी हमारे को एक्सपी मिलेगी। और एक तो ना कहीं से भी न्यू सेरीन ऐसा नहीं है, पक्का बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे जंगल नहीं है, ऐसी जगह है बिल्कुल जैसे सैन मेटेयस है ना। There is something up. What could it be? Someone trashing around. Nobody is here, yaar. How can somebody think of it? कोई बंदा घुस भी नहीं सकता, इधर 3-4 लोग होंगे। ओ भाई कितनी आवाज करते हैं लोग। जैसे कि मैंने इसको अपने साथ रखा है। देखा बिजी बोला, बिजी बोला इसने। जब ये बिजी बोलना बंद करेगा ना तभी होने वाला है। जब इसने जब बिजी बोलना बंद करेगा ना और तब बोलेगा I think you must be having time या कुछ ऐसा करेगा। What? What? Do I have the time to return and see those dear to me? Constantine, how are you feeling? Death is on my doorstep, and all hope has flown through the window. What? Come closer. What ill tidings do you bring? Yes. I thought you might want to know more concerning the events that have taken place. The attempted coup d'etat of the traitors. Yes, I am eager to hear what has transpired within these very walls. When I think of the cold-blooded face of that treacherous Kurt. You showed exemplary true courage. Not only have you looked out for me like always, but you have protected my advisors. कुछ और ही है। ये सही में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये तो और भी अच्छी बात है और ये अजीब बात है, बहुत ज्यादा अच्छी। क्या बोल रहे हैं? Very nice of her. I imagine that you know that Hikmet had less luck. Yeah, I know that. The banners of the Coin Guard as we speak. Most of the scholars were massacred, but their governor has sought refuge here. This treacherous commander must be celebrating at least his partial success. But his victory will be for a short time. He must be stupid to have thought that the nations of the continents will let him trade with them and won't cut him off. I wish him luck in finding a port that will welcome him. And you were able to catch his lieutenants. The squires will pay for the crimes of their masters, as happens too often. It is hard to swallow that Kurt betrayed us. We've known him for such a long time. To think that he trained both of us, drumming into us, fight with honor. How tragically ironic. You were able to turn that to our advantage. That little phrase is what saved our lives. As to why he betrayed us, he has taken that with him to the tomb. Fortunately, the entire guard did not follow his example. Many of his What do you plan on doing to them? How can we give them our complete trust? We cannot. But we cannot do without soldiers either. We shall have them pledge allegiance to the congregation of merchants, and I shall name a trustworthy intendant to keep them in line. Nothing more can be done. Before you leave, I must ask you something. All right, I'm listening. I'm always suffering, cousin. I'm in such terrible pain and we're yet to discover a cure. I'm sorry. I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer.
with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men lives in San Mateus. His healing powers are supposedly miraculous. Alas, it is a miracle we are in need of, my son. If I may, Your Highness, we have the best physicians in the world. It shouldn't stop Father Petrus from praying for a miracle. It can't do any harm. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem Telemea pray for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. नहीं हिकमत नहीं. Let's see if this thing helps. Because obviously जो टोटके वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर हेल्प करते हैं. कोविड में भी टोटकों में से ही तो हम टोटके नहीं जुगाड़ लगा के हम बचे हैं. कुछ जुगाड़ लगाए हैं हमने. ये नींबू वगैरह ये सब डाल डूल के पता नहीं क्या क्या डालते हैं लोग. इस सबसे पहले इस वासों को हम हटाते हैं. अब मैं जा सकता हूँ क्योंकि इसी को पता है उसके बारे में. इसी को पता है. और जब एक्चुअल में ये बोलेगी ना हमारे को हेल्प ऑफर करने के लिए तब हम करने वाले हैं. मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है. स्टील ड्रैगर 85. सेम है. This won't help here. Not there. ओ भाई इसके पास कुछ और है. विल पावर 2 चाहिए. हाँ वही ना मैजिक रीजनरेशन की तो बात है. और ये है एचपी हीलिंग. विल पावर 1 चाहिए. मैं कर सकता हूँ ट्राई. सबके साथ चश्मा ही मिल रहा है. चश्मा नाइस वर्ड. चश्मा ही मिल रहा है सबके साथ. ऑब्वियसली हर चीज के साथ चश्मा ही मिल रहा है तो क्या फायदा. अब मुझे पता है वो लोग रिस्पॉन हो चुके होंगे और नॉट. आई कांट. यार मेरे साइड में ही सामने थी वो बिल्कुल. We shouldn't be here actually में just we should be there obviously. और क्या. अबे यार कहाँ जा रहा हूँ मैं. सही में मेरा कंट्रोलर. What? They are here now. I think they were always here. So they weren't always here. I don't care भाई. इनके पास कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला.
सो किधर होगा ये आदमी? आई प्रेफर दिस वे। हु नोज कहाँ हम लोग आगे पहुंच जाएं। आई थिंक थोड़ा सा रास्ता आ चुका होगा। यस, दिस वे। चलो भाई। मैं इनसे अब लूट भी नहीं लेता भाई। दिस इज द विलेज। मुझे पता है वैसे तो अभी कॉन्स्टेंटीन के बचने के ज्यादा आसान नहीं है। हो सकता है कि जब तक हम लोग उधर जाएं वो बंदा मर भी जाए। बट वी शुडंट लॉस्ट होप्स, एट लीस्ट इफ इट्स फॉर कॉन्स्टेंटीन। हटो बहन। अबे ओ भाई, ये ट्री लवर रखते हैं आई थिंक। This is my only hope here अब. This guy. Quest! Get out! Who do you think you are to defoil our ritual? One of those mind shakers, no doubt. Aiden, it is your duty to assure we are not interrupted. 1,000 pardons, Tien. It is indeed one of those mind shakers. A mind shaker? Look at him more closely, Aiden. He is an Almanawi. Present yourself and tell me why you interrupt our ceremony. My name is Desarde. I've come looking for you to ask for your help. I greet you, Donegad. We are so sorry to have interrupted your ritual, but my friend truly needs your advice. Don't excuse yourself. Are you the daughter of Bladned? Are you not a Donegad as well? It is true, but my powers of healing are far less powerful than your own. And you travel with a mind shaker. Strange trio. I am Bishop Petrus, but I am not a mind shaker. A missionary. Why, pray tell, are you asking? There are people wearing the same insignia that pass their time troubling the minds of my people. Missionaries? I was not aware. I'm only here to accompany my friend, I assure you. He is not a bad man, Donegad, even if his beliefs are foreign and strange. Then, how can I help you? My cousin suffers from a terrible sickness, the Malachor. I do not know this sickness. But perhaps we call it by a different name. It turns the blood black and provokes terrible suffering. And alas, it is fatal in all cases. We've never seen the ailing touched by such a sickness. And I doubt I am able to heal your cousin. We are looking for a remedy, but urgently need to relieve his pain. Could you slow the progression of the sickness? Keep him from suffering? In that, I can help you. I know how to make one forget the pain, even the most severely wounded. But Tiern, with all that is happening now, you cannot leave to visit this ill person. It is true. My village needs me now. I cannot leave. I must attend them. What is going on? Perhaps we can help you. Truly? You? Do they have a choice, Aiden? They do really seem to have need of me, don't they? Well then, tell us what we need to do. The situation has become unbearable. And it all started when these mind shakers began arriving. They wanted to convert everyone and take them to another place. Turn them away from us. And of course, the village folk would not be persuaded. But the mind shakers remained. And it was also at that time the Tenland started to attack. It is not their way to do as such. There are many wounded.
And recently, many have gone missing. We must discover from where these monsters come. I can try and talk sense into the missionaries. Perhaps with the help of Bishop Petrus. As for the attacks of the creatures, I will see what I can do. But I need more information. Our master hunter, or the families of the taken, could most likely help you. Very well. I'll take care of it. Let's go and see this master hunter. He may be able to explain all there is to learn about these attacks. ये इधर ही खड़ा था हमेशा से. Good day. Are you the master hunter? Bear tear to madre, Naixe. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Denegad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. Can you tell me more? The Ten Lands have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded, and some of our young have even disappeared. It may be that the Ten Lands killed them, but it is also possible they followed the missionaries. What can you tell me about the Ten Lands? They are normally very peaceful creatures, very calm, but who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Were there many victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Donegad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I try to chase them away, to destroy any nests that I found, but still, more of them come. And now our children disappear. Can you tell me who the children are? A young fisherman and a gatherer. I will go and see them. Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Yes. Yes. This has never happened in my lifetime. What do you know? Speak. Lives are at risk. I do not speak of things I am not sure of. The Renaixe, like you, do not understand the bond we have with nature. I must be going. तो अभी जो है ये वाली मैंने कभी देखी नहीं है तो मेरे को पता नहीं है इधर क्या होगा बट इधर बहुत मैं इधर आया हूँ मतलब मैं इसके साइड से गया था बिल्कुल
इसको भी मार रहा है। Good day. I am the legate of the congregation of merchants on this isle. Might I ask you a few questions? Of course. Our allies from the continent are always welcome among us. What do you want to know? Have you heard about the Tenlen attacks on the village? I didn't know those creatures would give you that name, but yes, we have heard talk about the attacks. We offered them our offered creatures in their most difficult hour. In exchange for some inspiring conversation, I suppose. समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं लोग. These horrible beasts have most certainly been sent by the demons of this isle. To chase only a few away would be of no use. If they truly... You haven't been victim of these attacks? On occasion, yes. नहीं. तो अभी ये है our mission here is we must return these lost souls light and guide them so that they might receive the revelation. We have constructed the perfect village. Here discover peace. Where they might discover peace in this protected paradise. ये कितना लंबा बोलते हैं ये लोग. धीरे धीरे यार थोड़ा सा clearly बता दो अच्छे से. Ask about the and the demons islands. तो ये क्या है यार? मुझे सही में समझ नहीं आ रहा है. ये लोग सही में नहीं जानते यहीं पे रह रहे हैं और इनको यही नहीं पता कि टेनलेंस कौन है. These creatures have been riled up by the demons of the island, who have come to realize we are near victory. Sending them against these poor people, they maintain them in a state of fear and obedience to their shaman healer. There is only one way to truly make these attacks cease, my child. Convert these people. Defeat these demons. The Denegar of this village wishes for you to depart. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey him? Haven't you understood that he is a servant of the island's demons? To leave would be to abandon the simplistic souls of all those that follow him, ceding victory to the demons. No, my child. We will not leave this place until the light shines over every dwelling. The Denegar of this village wishes for you to depart. You disturb the tranquility of their village. And you expect us to obey? No. I must go. We're going to need to find some leverage if we want to force these missionaries to leave. तो भाई चलिए अभी स्ट्रीम के लिए इतना ही. अगर आज अच्छी लगी तो एक लाइक मार दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इसी के साथ मैं आपको मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.